Good morning. Okay. Okay. Good morning. So, how are you all? Fine? Fine. Fine, ma'am. Fine. How Okay. are you, So, ma'am? I am also fine that. And today, yes, yesterday we have completed, yes, our lesson number Bye bye. 2. Lesson Two. number 2. And today we are going to start with our new lesson, that is Indian Lesson number 3. Indian Constitution. So I am presenting my screen with you, and others mute your mic. Are you able to see my screen, Yes, girls? ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. yes, ma'am. See, last we have learned about the Indian Constitution, and the Constitution means that the sets of what is mean by Constitution. A set of rules to run the government of a country. Yes, set of rules to run the government of the country. Very good. So now start reading preamble of our constitution. See that first. Who will say what is mean by preamble? What is mean by preamble? Who will say? Are you able to listen me? Hello. Yes, ma'am. You are able to. Yes, ma'am. Yeah. What is Yes, meant by preamble? See, preamble, it means the introduction part of a good deed or the purpose, aim and for the justification. ये एक ऐसी इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल इट मीन्स इंट्रोडक्शन. सी our starting, in our constitution book, the preamble has been written in our starting. Preamble it means, see that ये तुम्हें जो दिया हुआ है ना ये बॉक्स, वी द पीपल, इट इज कॉल्ड, जिसमें स्टार्टिंग लिखा हो, यू नो दैट, जैसे कोई भी बुक्स हो तो कहते हैं उसमें जो है पहले उसका सब ऑथर के बारे में लिखा होता है कि ये ऑथर ने व्हाई ही हैज रिटन दिस बुक. तो लाइक दैट टाइप के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस दैट द बुक ऑफ लॉ. तो बुक ऑफ लॉ का जो फर्स्ट पेज है उसमें हमारा प्रियम्बल लिखा हुआ है. प्रियम्बल इट मींस द इंट्रोडक्टरी पार्ट, and it means the aim, the purpose and justification. It means जैसे सबको इंसाफ मिलेगा, हमारे जो है कंट्री के एम्स क्या है, पर्पस क्या है ये बुक्स लिखने के पीछे, एंड दैट इंट्रोडक्शन पार्ट इज कॉल्ड प्रियम्बल. अंडरस्टैंड? सी दैट ये हमारा प्रियम्बल इस तरह से लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, सकीना स्टार्ट रीडिंग. we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens. See, our country is democratic country. Here we choose our government. Yes, by giving the vote. Yes or no? And here we are giving that kind of security that all the citizens are secured here. It means they are safe here. Continue. Justice, social, economic and political. इट मीन्स अब जस्टिस, जस्टिस मतलब इंसाफ. लोगों को इंसाफ कौन सी चीज में मिलेगा? तो सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. इट मीन्स सामाजिक तरीके से, इवन जो है पैसे से, इकोनॉमी मतलब पैसा, एंड इवन पॉलिटिकली भी सबको सेम इंसाफ मिलेगा. इफ दे आर रिच, इफ द सिटीजन आर रिच और इफ द सिटीजन आर पुअर, दे विल गेट इक्वल जस्टिस. कंटिन्यू. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship.
It means liberty. It means they are free to express their feelings. They are free to express their belief, their faith, and their worship. India is only a country where you know that more than six religions people, more than one or two religions peoples are living together. Here, the Hinduism, Islamism, Jainism, Christianity, Sikhism, Buddhism, all the religions are living together, all are having their own worshipping style. Yes or no? All are having their own worshipping style with a different, you know that ये कोई country में इतना ज़्यादा जो है वो नहीं, almost in other country you will see that they are almost believing in Christianity, but only India is a country where more than two or मतलब more than 5 or 6 religions peoples are living together and having their own style of their worshipping. Continue. Equality of status and of opportunity. See, equality. Here we can see that equality in each and every citizen. यहाँ पे सब सिटीजन जो है वो इक्वल है. नो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. यहाँ पे सब किसी में भी भेदभाव नहीं है, सब इक्वल है. इफ दे आर रिच, इफ दे आर पुअर, तो किसी में भी भेदभाव नहीं है. इफ दे आर बिलोंगिंग टू सुपीरियर क्लास, इफ दे आर बिलोंगिंग टू अ बैकवर्ड क्लास, there are no discriminations are there in India. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. कंटिन्यू. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity. See, we will not only give assurance, मतलब कि सिर्फ dignity किसी एक individual की self respect को नहीं, मतलब कि we will give the unity, we will stand united in our nation, and even we will give the respect to each and every individual peoples. In our constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and this constitution. See, our Constitution Assembly, मतलब Constitution Assembly जो है वो कब start हुई थी? 26th days of November in 1949. उस दिन से जो है Assembly held हुई that we will write our Constitution. You know that India got freedom in year 1947. 1947 में जब freedom मिली, फिर उसके बाद जो है Constitution लिखना start हुआ. Like क्यों? क्योंकि country पहले जो है country जो है वो रॉयलिटी में थी. इट मीन्स दैट इट इज लाइक प्रिंसली स्टेट थी. यहाँ पे प्रिंस की हुकूमत चलती थी. देन इन ईयर 1950 आवर कंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट सिस्टम. आया समझ में? गवर्नमेंट सिस्टम बाद में आई. एंड देन एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन. But Constitution Assembly, it means it take too long time to write the Constitution. The first Constitution Assembly was held at 26th. It means 26th November 1949. Now continue. Preamble of our Constitution. The systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the Constitution of country. See, here the one question is come. What is Constitution? Constitution means a systematic rules and the set of rules to run the government. मतलब कि systematic way में rules लिखना, systematic way में rule follow करना for a government of a country is known as constitution. एक ऐसी book के जिसके अंदर sets of rule लिखे हुए हो, number of rules लिखे हुए हो, और उसी rules के हिसाब से country और government को चलाना, that is known as constitution. Continue. Constitution can be in written or unwritten form. See, Constitution can be written and Constitution can be in unwritten form. Our Constitution, it is in written form also, but you know that if Supreme Court or government, जैसे कि right now the BJP is having a hold of government in their hand. Yes or no? अभी BJP की government है. They are ruling the country. Yes or no? Yes or no?
तो वो Yes. जो भी कोई भी रूल्स बनाएंगे तो दैट रूल्स वी आर गोइंग टू फॉलो, यस और नो? So it means that the rule which is made by government and each and every citizen has to follow that rule. It's known as a constitution, the rule made by our government for the country. Continue. Our constitution starts with the preamble. See, our constitution starts with the preamble. मतलब कि जो preamble, it means that the starting page, introductory page, it's having the वो जो introductory page जो पहला page होता है उसको क्या बोलते हैं? What we can say? Preamble. और हमारे preamble पे ये जो blue color का जो तुम्हें जो triangle के जैसे form में जो लिखा है, our constitution की books जो है उसके पहले page पे ये लिखा हुआ आता है. Understand? Yes. Yes. Okay. चलो. How was the Constitution of India formed? किस तरह से Indian Constitution formed हुआ? It means how, लिखा कैसे उस जमाने में during the 1947 when India got freedom from the Britishers, and how the Constitution have been formed? किस तरह से formed हुआ? Continue. The Constitution of India is a statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. See, सेक्युलरिज्म, सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल ये था कि लोगों को डेमोक्रेसी मिले. डेमोक्रेसी इट मींस लोकशाही कंट्री. यस, लोकशाही. हियर द पीपल्स आर फ्री. यहाँ पे जो है किसी की हुकूमत नहीं है. फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल एम, नेशनल गोल ये था to the people should get a democracy, people should get a socialism. It means socialism मतलब सामाजिक भेदभाव ना हो. Each and every people is same in the eye of government. Secularism मतलब not connected with a religious or spiritual matters. It means that India free है. यहाँ पे India is a secular country. Here कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता कि यू आर जस्ट गोइंग टू बिलीव इन दिस रिलीजन. सी, वी द मुस्लिम पीपल्स, वी आर लिविंग हियर, वी आर हैविंग आवर ओन वर्शिपिंग स्टाइल. यस, here the many religious peoples are living together with their own worshipping style. It means that is called secular country, not connected with the religious. Understand? Yes. Continue. The Constituent Assembly was established. The constitution was established. It means it was started working. जो work है वो कब start हुआ था? It was started in year 9th December 1946. It started working from, मतलब जो constitution assembly का जो है work कौन से year से start हुआ था? 1946. मतलब के that we are knowing that we are going to get, you know that के freedom from the Britishers in year 1947. So it means that 1947 15 August 1947 we got independence from the Britishers. Before that we have started to written what our constitution. Understand, the constitution work has been started from which date? 9th December 1946. And our country got freedom in which year? 1947. 15 August 1947. We are, you know, we are celebrating Independence Day. Yes or no? Yes. Continue. It started working from 9th December 1946. The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. See, Constitution Assembly जो है उसको formed करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, at that time the prominent means a famous and distinguished, मतलब different from others, ऐसे scholars और वैसे leaders को बिठाया गया था कि जो assembly के अंदर जब Constitution Assembly जब first time जो है held हुई, at that time India के the best scholars, even the leaders which having the leaders those who are famous,
वैसे ही लीडर्स एंड वैसे ही स्कॉलर्स को बिठाया गया था। क्या लिखने के लिए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। कंटिन्यू। Leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad. नहीं बेटा, the political vision and the Sorry. foresight was Their political vision and foresight was incorporated in the constitution. सी मतलब कि ये जो लीडर्स है, जो फेमस लीडर्स या फेमस स्कॉलर्स है, व्हाई दे हैव सिलेक्टेड फॉर द असेंबली? व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, देयर फोरसाइट ऑफ द इनकॉर्पोरेट इन द फील्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो उनको पता था हाउ टू राइट अ पॉलिटिकल, इट मीन्स दैट द वर्क विच दे हैव डन ड्यूरिंग द you know that to make India free India from Britishers. So on the eyesight of seeing their political vision उनका ज़्यादा था, even than the incorporation in the constitution. For that's why these leaders are selected in the to write the constitution assembly. Now, which leaders are selected for in constitution assembly? Leaders Continue. Leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh, etc. provided their guidance. See, this all peoples were selected in the assembly and this all leaders have guided. It means that all peoples have given their own suggestion to write the constitution. Understand? कोई भी एक book लिखनी हो तो see, if I am sitting alone, so मैं सिर्फ और सिर्फ you know that the ideas which coming in my mind that I will write. But if the number of the peoples are sitting with me and those they are scholars, even they are having lots of good knowledge, so you know that they will give their own suggestions. तो सजेशंस आएंगे तो यू नो दैट कि अच्छी तरह से हम रूल बुक लिख सकेंगे ना. सो दिस ऑल लीडर्स हैव गिवन देयर ओन गाइडेंस, अंडरस्टैंड, टू राइट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution means a set of rules book. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. See, even the Frank Anthony represents Anglo-Indian. It means Anglo-Indian means what? Who will say what is mean by Anglo-Indian? मतलब Frank Anthony जो है ना, he was also in this meeting. He present Indian community and H.P. Modi represent Parsi community. चलो वो पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे. बट व्हाट इज मीन बाय एंग्लो इंडियन? हु विल से एंग्लो इंडियन? व्हाट इट मीन्स बेटा? कैन एनीवन? एंग्लो इंडियन, इट मीन्स द पर्सन who is relating to both India and British. Understand? मतलब both, like के भाई पता है ऐसा होता है कि किसी के मदर जो है वो इंडिया के होते हैं और फादर जो है वो ब्रिटिशर्स होते हैं, या तो फादर इज ब्रिटिशर्स एंड तो दिस द वन हु इज रिलेटिंग टू बोथ British and Indian, this is called Anglo-Indian people. So here in this meeting, the Frank, who is this person? Frank Anthony is also an Anglo-Indian community and H.P. Modi represent the Parsi community. Continue. The committee had various constitution scholars like Alladi Krishna Swamy Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, etc. See, the committee, it means the assembly में जो number of people बैठते हैं उसको बोलते हैं committee members. Yes, तो वो committee members में when the type of the constitution लिखा जा रहा था, so even the scholars are also was there like Alladi Krishna Swamy Iyer, even Dr. Baba Saheb Ambedkar and K.M. Munshi. Continue. Continue. There were female members like Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. See, it means, yes, it means that not only that the male members were
there. Even 2 female members were also there in written this constitution. Which are the 2 females? Sarah, give me answer. Which are the 2 females are included to write the constitution? Which 2 females are included in the committee to write the constitution? Which 2 females? Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. Yes, continue. Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly. See, Dr. Rajendra Prasad was the first President of India, yes or no? The first President of India has also been a President of Constitution Assembly. Constitution Assembly का President भी वही बने, Dr. Rajendra Prasad. And you know that Dr. Rajendra Prasad is the first Dr. Rajendra Prasad is the who? What? First President of India. एक मिनट, continue. There was a number of subcommittees to take care of various aspects of the constitution draft. Continue. See, it means that there were a number of subcommittees. It means a main committee, uske andar subcommittee, they takes the various aspects of constitution. It means that when we are writing a rule book for a country, we should take care of each and everything, yes? So not only a main committee, but the subcommittee is also working on a minor or a little aspects also. Continue. Drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to ma'am. I'm not able to see after. Dr. Baba Saheb able to see. Gave to the Now can you able constitution. to see? Yes, ma'am. See now, yes, the final shape. Dr. Baba Saheb Ambedkar have written our constitution. A final shape, मतलब final. You know that ये सच बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा constitution, इतनी जो बुक, थिक बुक है, वो by heart मुंह पे लर्न थी. Understand? He was the only person, you know that at that time जब constitution लिखा जा रहा था, तो उस टाइम पे टाइपर थे. अभी कैसे कंप्यूटर आ गए, उस जमाने में टाइपिंग था, टाइपर. तो उस टाइपर से जो है वो टाइप करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के बीच के 2 और 3 पेजेस जो है वो गुम गए थे. अंडरस्टैंड? तो एट दैट टाइम द कमिटी मेंबर्स जो है वो बहुत टेंशन में आ गए कि अभी कौन सी बात हम भूल गए होंगे, मतलब क्योंकि अगर वो पेज गुम गए तो हाउ वी विल नो दैट यहाँ पे कौन से पॉइंट्स लिखे थे. तो एट दैट टाइम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेड दैट देयर इज नो नीड टू वरी. मुझे पूरा का पूरा मुंह पे लर्न है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. Yes or no? You know that Dr. Baba Saheb Ambedkar was born in? कहाँ पे born हुए थे? कहाँ पे born हुए थे? नहीं पता. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. Dr. Baba Saheb Ambedkar was born in Bhavnagar, and Rajendra Prasad, he was elected as the president of the committee of Constitution. Continue. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. See, constitutions लिखने में कितने साल हुए? 2 months, 2 years, 11 months, 18 days. It means almost 3 years हुए थे. Yes or no? It takes 2 years, 11 months, 18 days to write the constitution. Total how many meetings has been held to write the constitution? कितनी बार meetings बिठाई गई थी? कितने sessions हुए थे meeting? 166. Yes, 166 meetings, and out of them the
26 November 1949, the committee passed the constitution which is enforced. It means जब से हमने उस पे execution मतलब अमल करना, वो जो constitution पे हमने अमल करना कौन सी ईयर से स्टार्ट किया? 26 January 1950. You know that we are celebrating our Republic Day on 26 January. You know that what is the reason behind to celebrate Republic Day? Ma'am, constitution means the whole book was over. हाँ, and we have started. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री में सबने 26 जनवरी 1915 से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट किया. अंडरस्टैंड? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन पीपल्स उसको फॉलो करने लगे, एंड so that why we are celebrating 26 January as a Republic Day in India, because 26 January 1950 was the first day. From that day we have started to follow our constitutions, which is written by our leaders and the scholars. Yes, and the constitution is written by whom? Our constitution is written by Dr. Rajendra Yes, Dr. Bhim Rao Ambedkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Dr. Bhim Rao Ambedkar is also known, his real name is Bhim Rao Ambedkar. Dr. Baba Saheb Ambedkar was born in Bhavnagar. See this, Maulana Azad, Bhim Rao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu and Kanhaiya Lal Munshi. These all people have contributed a lot to work on to make constitution. Understand? These are the creators of constitution. These all peoples are known as creators of constitution. Okay, come on. अगर constitution नहीं होता तो क्या होता बेटा? Constitution नहीं होता मतलब rules नहीं होते तो क्या होता? तो सब मैम अगर कुछ भी होता तो कोई अगर कोई चोर ने कोई चोरी की होती तो वो नेक्स्ट टाइम भी चोरी करेगा ही, क्योंकि कोई जेल में डालने वाला नहीं है. Very good. Yes, rules plays are most important role. Otherwise, the people will do whatever they want to do. They will do the anti-social activity like robbing, like like murdering. They will create a violence. They will create a terrorism. Yes or no? This all thing is controlled because of rules. The systematic rules made by government. See, the constitution सिर्फ हमारी country में नहीं, in the world there are 206 countries are there. So each and every country is having their own constitution book. Yes, their own constitution, their own sets of rules. Continue. क्योंकि अगर कोई भी country rules के बिना चलती ही नहीं है, yes or no? Rules नहीं होगा तो कोई मेंटेनिटी नहीं होगी, मतलब कि each and everyone will do whatever they want to do. Continue now. Why do we need a constitution? What if there is no constitution? Why? See, there is a question that why we need constitution. हमें constitution की क्या जरूरत है? Why there is, what if there is no constitution? अगर constitution नहीं होता तो क्या होता? That we are going to learn about. That we are going to learn in this topic. Continue. No country can function without a constitution. A constitution serves many. No, the country cannot function. किसी भी country की तुम function without constitution कर ही नहीं सकते हो. Constitution plays an important role to run any government. Yes or no? गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है. कंटिन्यू. A constitution serves many objectives. Continue. It is a document which finally weaves the ethos and ideals of our country. See, the constitution gives the that we can say that final waves and ethos, like ethos. Ethos means that we can say that that here all the people, जैसे कि rules and regulations नहीं होगा, so that the peoples will do whatever they want to do. And ethos, it means that we can say the
custom, the character, you know that ethos, the characters are placed and see अगर इथोस नहीं होता आइडियल कैरेक्टर तो कोई जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं होता तो किसी का भी अपना खुद का कैरेक्टर्स या आइडियलिटी होती ही नहीं यस और नो they'll do whatever they want to do so the main characteristics of this is to ethos and the ideals of our country. Continue. It tells about the kind of government our country would have. See, it tells about the kind. It means that जैसा rules and regulations होगा तो वो हमारी कैसी गवर्नमेंट कैसी है उससे पता चलता है ये तो अगर गवर्नमेंट जो है कोई भी रूल्स बना देती है कि भाई कभी सी जैसे कि ये लॉकडाउन तो डिक्लेयर हुआ था बिकॉज ऑफ COVID-19 यस राइट नाउ ऑल्सो यू नो दैट इन मुंबई इवन इन अहमदाबाद द लॉकडाउन इज गोइंग ऑन यस और नो तो वो जो गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर किया अब गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि नो वन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द होम तो वो क्या है कि हमारी गवर्नमेंट का रूल था जिसे हम सबको फॉलो करना है तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया ही क्यों टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम COVID-19 डिसीज यस और नो तो इससे भी पता भी चलता है ना कि गवर्नमेंट कैसी है हाउ इट इज केयरिंग फॉर द पीपल्स यस और नो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है ना नाउ सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस दैट द रूल्स कोई भी गवर्नमेंट दे उसको हमें सबको फॉलो करना है गवर्नमेंट ने जैसे कि राइट नाउ इन करंट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर वन रूल दैट बिकॉज ऑफ COVID-19 द कंट्री इज गोइंग टू बी अ लॉकडाउन फॉर एटलीस्ट कितने टाइम तक लॉकडाउन हुआ था लॉकडाउन कितने महीने तक रहा था 2 or 3 months. No, almost 2.5 months. Yes, almost 2.5 months. So Yes. this rules is declared by the government for the protection of the people, and this rule is made by the government. So we have to follow these rules. We can't neglect. We can't हम नजरअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते. Otherwise जो लोग पता है ना लॉकडाउन में बाहर निकलते थे तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता था. Yes or no? The one who is breaking the rules made by the government will be punishable offense. Yes or no? तो उसको punish मिलेगी. Continue. It tells about the kind of government our country would have. Continue. How to run the administration of our country? In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. See, how the administration का मतलब होता है मैनेजमेंट कौन करता है तो गवर्नमेंट जो जिसकी थी जो अभी जिसकी कौन है अभी गवर्नमेंट हमारे इंडिया की कौन सी पार्टी के हाथ में है right now which party is holding the government system BJP? Yes, BJP, Bharatiya Janata Party. They will going to run the whole government system. Yes or no? So you know that the administration it means the management of the country जो है वो उनके हाथ में. Why? Because right now they are the ruling party of the country and they will run the whole country by themselves. Continue. So you know that we will elect our leader. हम खुद ही हमारा leader. Here the citizen. India is a democratic country. Democratic it means लोकशाही country. Here the people themselves select their own government. See हम ही वोट देते हैं हमारी वोट से गवर्नमेंट जो है वो बनती है. In India every 5 years election will held and the party will change. And this because of the vote of the people. हम ही वोट देते हैं और हमारे ही नंबर ऑफ वोट जिसमें मेजोरिटी ऑफ वोट जिस पार्टी को सबसे ज्यादा जाते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट को रन करती है. इट मीन्स द होल सिस्टम इट मीन्स द होल कंट्री को रन करती है. कंटिन्यू. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. See, there are the provision. ऐसे डिपार्टमेंट भी है कि अगर कोई भी लीडर जो लीडर है खुद कंट्री का अगर वो अपने पावर का मिसयूज करता है यस और नो तो उसके लिए भी प्रोविजंस मतलब तैयारी. ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि दे टेक एक्शंस ऑन दैट लीडर्स दोज हु आर मिसयूजिंग जो अपनी पावर या फिर अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं. यस और नो द वन हु इज लीडर एंड द creating a misuse of their own power.
तो उसके लिए भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली द सिटीजन, इवन द if the leaders are also doing some wrong thing, then the action should be going to take on them. Understand? Yes. Okay. Continue. Salient features of our constitution. Democratic. Silent features, it means a good features, like you know that a different, जैसे कि सी तुम कोई बुक खरीदो या तुमने मोबाइल खरीदा है तो उसमें उसके फीचर्स पीछे लिखे हुए आते हैं, यस, दैट कि ये हमारी ये मोबाइल्स के अच्छे अच्छे फीचर्स है। अगर कोई बुक्स तुम खरीदो तो बुक्स के पीछे जो है वो जैसे कि स्टोरी, जैसे कि तुम कोई भी बुक्स, जो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो बुक्स के पीछे भी अपने साइलेंट फीचर्स लिखे हुए होते हैं। साइलेंट फीचर्स, इट मीन्स द स्पेशलिटी, the characteristics, the objectives of that book. तो हमारी कंट्री के साइलेंट फीचर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक रूल। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल, इट मीन्स हियर द पीपल इज ओनली गोइंग टू सिलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। यू कैन सी दैट के पिक्चर दिख रहा है, वहां पे सब अपना वोट दे रहे हैं, यस, द वोटिंग पोल और वोटिंग बूथ की पिक्चर में दिख रहा है ना, वोटिंग पोल एंड वोटिंग बूथ, दिस द मेंबर and this one boy and girl is giving their own vote. You know that ये दो जो लोग वोट देने के लिए आते हैं, और यहाँ पे जो ये मशीन है ना एक साइड पे, that is called EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो मशीन दिख रहा है सबको, ये are you able to see this? This machine is called EVM. EVM, it means electronic voting machine. See this here, the people, we choose our government by giving our own vote, and our vote is very important and precious. You know that we only select our government. Now the first silent feature of our constitution, मतलब हमारी constitution का सबसे बेस्ट फीचर क्या है? तो डेमोक्रेटिक रूल। डेमोक्रेटिक रूल मतलब के इट मीन्स लोकशाही कंट्री, हम ही हमारी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। कंटिन्यू, बाय गिविंग आवर ओन वोट। India has adopted the democratic system of government. Democratic system of government means what? Means we have to vote. Yes, yes, we are going to elect the person as a prime minister of India, and by giving our own vote, मतलब हम ही जितने नंबर मेजोरिटी और वोट जिस पार्टी को जाएंगे वो पार्टी जो है वो उस पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सो वी आर ओनली, यू नो दैट वी द पीपल आर सिलेक्टिंग आवर ओन गवर्नमेंट, मतलब हम ही हमारी गवर्नमेंट्स को बनाते हैं। कंटिन्यू। General elections are held in our country every 5 years. See, हमारी कंट्री में इलेक्शंस मतलब गवर्नमेंट चेंज होने का इलेक्शन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स के बाद होता है? एवरी 5 years. It means that जो पार्टी सिलेक्ट हुई है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी सिलेक्ट है तो बीजेपी इज गोइंग टू बी the one, Mr. Narendra Modi has selected as a Prime Minister of India. So now the tenure period of time as a Prime Minister कितने टाइम तक उनका रहेगा? For at least 5 years. और इंडिया में ऐसा है कि 5 years के बाद अगर दूसरी टेन्योरशिप भी वो जीतते हैं, मतलब फिर से उनको नंबर ऑफ वोट ज्यादा मिलते हैं, तो ही विल बिकम अ नेक्स्ट टाइम ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे अभी हुआ। यस, 2014 में जब इलेक्शन 2014 में जब इलेक्शन था, और वो 2014 से he has almost 2015 से he has completed the 5 years. Then also the next tenureship he also wins. So right now also he is a prime minister of India. But you know that in America एक इंसान एक ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट सिस्टम है। इंडिया इज हैविंग, यू नो दैट हियर द प्रेसिडेंट इज आल्सो डिफरेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो डिफरेंट। बट इन अमेरिका वहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है, ही इज ओनली गोइंग टू रूल द कंट्री, और कोई एक इंसान वहां पे एक ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है फॉर एटलीस्ट 10 years. अंडरस्टैंड? कंटिन्यू। Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. It means that, see that when you could be able, yes,
when We you are cannot imagine when- democracy without elections. yes, we cannot able a democracy without the election. Election होता है, पता है ना, सब अपने वोट्स देने जाते हैं. तो see that 18, when you are be 18 or above 18, it means that you will get your election card to give your vote at the age of 18 or more than 18. It means that is called adult suffrage. Adult suffrage, it means the person who can able to give their vote at the age of 18 or more than 18. It means one person, one vote at the age of 18 or above 18. Continue. We cannot imagine democracy without elections. People all over the country play their role in electing their representatives. Representative, it means the person who is that had get a ticket for the prime minister seat. तो हम ही हमारे representative, it means जो पार्टी का represent, बीजेपी का representative it's Mr. नरेंद्र मोदी, and the कांग्रेस का representative कौन है? तो who is the representative of Congress party? Rahul Gandhi. Yes, Rahul Gandhi is the representative of Congress party. Who is the representative of Aam Aadmi party? Who is the representative of Aam Aadmi party? Who is the representative of Aam Aadmi party? Kejriwal. Yes, Kejriwal is the. So like this way, see that even the at that time, the one who will get the number of highest vote will become the Prime Minister of India. So we only going to, that we only give our vote and we only select our government. हम number of vote जो है वो किसी का mic on है please. Time is up. Okay, चलो bye बेटा. I will send you the homework. Okay. Okay, ma'am. In group. Bye. Okay. Okay, ma'am. Okay, Bye. 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 Bye.